Hello everybody, welcome to iExamB. Congratulations to all those who have cleared phase 1 and wish you all the best for phase 2. Those who have not cleared, don't get disheartened. There are a lot of exams lined up. You can learn from this exam and you can prepare accordingly for the upcoming exams. Moving to question of the day. Can you skip some topics for phase 2? The answer to that is no. You cannot skip even a single topic for phase 2. Why? See, already the syllabus is quite clearly defined. First of all, look at the pattern. There are two papers. Paper 1 is descriptive English and paper 2 is your law. Law paper is divided into two parts, objective and descriptive part. 70 objective, 30 marks for descriptive. Now in paper 1, that is your descriptive English, there will be essay of 30 marks, précis of 30 marks and comprehension of 40 marks. Coming to your law, the syllabus is already given in the notification along with weightage. Criminal law has a 30% weightage, then corporate law has another 30% weightage and securities law 40% weightage. So these are the expected number of questions out of 70 MCQs that you will see in the exam. So each and every subject becomes really important because last year if we see within a range of 5 marks, 75 and 80.5. Within a range of these 5.5 marks for paper 2, all the students in the general category have cleared the exam. तो इसका मतलब सिर्फ 2-3 क्वेश्चन से ही डिफरेंस आ जाता है. यहाँ पर हम एक सब्जेक्ट से 7-8 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं. सिक्योरिटीज लॉ में 10 टॉपिक्स हैं तो आप अकॉर्डिंगली एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस. सो एवरी स्मॉल टॉपिक मेक्स अ डिफरेंस इन फेज 2. सिलेबस से बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं है. वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग केस लॉज एज वेल. केस लॉज के क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव पार्ट में एक्सपेक्टेड नहीं है, फेज 1 में भी नहीं आए थे. बट you may need to study some important case laws in order to structure a better answer for the descriptive part. उसके लिए आप कुछ important case laws देख सकते हैं, otherwise case laws पढ़ने की जरूरत नहीं है. सेक्शन नंबर्स भी नहीं पूछे गए थे. आर्टिकल नंबर आए थे कॉन्स्टिट्यूशन से, बट अदर देन दैट सेक्शन नंबर्स नहीं पूछे गए थे. सिमिलरली वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि सेक्शन नंबर्स आएंगे. तो सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस को एक बार देखकर याद कर लीजिएगा. Otherwise, you don't have to go and mug up each and every section number. As I was saying, 5 marks के डिफरेंस में सभी स्टूडेंट्स जनरल कैटेगरी में लास्ट टाइम क्वालिफाई कर गए थे. तो अब यहाँ देखिए 5 मार्क्स यानी कि 5 क्वेश्चंस इन ऑब्जेक्टिव, और अगर ऑब्जेक्टिव में 2-3 क्वेश्चंस का फर्क रह गया तो डिस्क्रिप्टिव तो बहुत ही बड़ा गेम चेंजर है, बिकॉज दैट इज सब्जेक्टिव, दैट इज नॉट इन योर हैंड. आप कैसा आंसर लिखेंगे, एग्जामिनर उसे कैसे इवैल्यूएट करेगा, उस पर डिपेंड करता है. सो कीपिंग दिस इन माइंड, प्रिपेयर फॉर द सब्जेक्ट्स अकॉर्डिंगली. I have already discussed preparation strategy, given you a study plan in one of my previous videos. Download that and start your preparation अगर अभी तक start नहीं किया है. And trust me, you have around 27-28 days and they are enough time. See, there are 3 topics, CRPC, IPC and evidence. Then there are 3 topics, companies at LLP and IBC. 6 and 10 over here. So that means you have 16 topics to prepare. I know companies act बहुत बड़ा है, but LLP छोटा है, IBC भी limited आ रहा है, IPC में भी limited topics आ रहे हैं. Then these 3 acts, they are also very small, not too much, not too long. Similarly, आपके ये rules, SEBI procedure for holding inquiry rules and SAT procedure rules, ये भी छोटे हैं. You have time in your hand, you can prepare, लग जाइए. These days will be a game changer for you. Also keep in mind, more than 14,000 students are appearing for phase 2 and there are only 25 vacancies. Around 57 students are appearing for every single seat. This may vary depending upon categories क्योंकि अभी तक हमें ये नहीं पता इसमें से category wise selected students कौन-कौन है. However, 3 students will only be selected for interview for 1 seat. 25 vacancies हैं, 75 students ही select होंगी. और अगर आप देखें कैसे सिलेक्ट होंगे, जनरल कैटेगरी की 11 सीट्स हैं, अनरिजर्व कैटेगरी की 11 सीट्स हैं. इसके लिए 33 स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा. थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है अगर लास्ट के कुछ स्टूडेंट्स के सेम मार्क्स आए. देन ओबीसी की 7 सीट्स हैं, यहाँ पर 21 स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा. फॉर एससी 9 स्टूडेंट्स विल बी कॉल्ड, एसटी के लिए 6, ईडब्ल्यूएस के लिए 6. इन दिस वे
75 students will be called for interview out of 1400 plus students who are appearing for phase 2. So you really need to prepare well to see yourself appearing for the interview. If you are looking for content to prepare for this exam, you can check out our SEBI Grade A Legal Phase 2 crash course, in which we are giving a flat 45% off. The new batch has started 2-3 days ago from 9th of August. आपको लाइव क्लास रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी. अभी तक 2-3 क्लासेस हुई हैं, वो रिकॉर्डिंग्स आपको डैशबोर्ड में मिल जाएंगी. And also there was one intro class in which there was a general guidance discussion. किस कंटेंट को किस तरीके से यूज किया जा सकता है, कौन सा कितना इम्पोर्टेंट है, वो सब हमने इंट्रो क्लास में डिस्कस किया था. In this course, you will be having live classes, practice tests, study material PDF, short crisp videos, interview guidance, and many other things. आपको डेमो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. यू कैन चेक दैट आउट. यू कैन सी वेदर द कोर्स इज यूजफुल टू यू और नॉट. B@I exam भी help you prepare 50% faster with crisp and concise content. अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. आप हमें कॉल भी कर सकते हैं इस नंबर पर टू नो अबाउट द कोर्स or for any guidance or discussion. Subscribe to our channel. Stay tuned. Thank you.